So, today we are starting a new topic, that is mineral metabolism. Okay. So, in this mineral metabolism we can see various types of minerals which are important to us. So, before starting this mineral you should know nutrient. The food that we are consuming, so today's topic is mineral metabolism. And before starting this topic, we should know what we are consuming, and when we are consuming, what it actually means. So, what the things we are consuming, they are these nutrients, they are classified into two different categories. One is called as macronutrient and second is called as micronutrient, MACRO macro and MICRO micro. Macronutrient is, it is needed in large quantity and they are specifically used for energy purpose, like carbohydrate, fats and proteins, or carbohydrate, lipids and proteins. Okay. So, what the diet we are taking? Major we are taking, that is to give you the energy, but a small portion, that is called as the micronutrient, that we are consuming, it is non-calorigenics, means it is not having any calorie. These are vitamins and minerals. These are vitamins and minerals. So, these two things it is required in small quantities, but they are very much essential. So, what are the minerals? So, minerals are the inorganic substances which occur in nature and are required in small quantities for the normal growth and functioning of the body. So, these minerals, they are required in small quantities, but they are very much essential for the normal growth and functioning. So, minerals can perform several vital functions which are absolutely essential for the very existence of the organism. So, what we are getting from this first slide is that we are consuming, it is having two parts, macronutrients and micronutrients. Macro means major, that gives you the energy, micro is very much essential for the growth and development. So, minerals, they are classified into two categories which is called as the macro and micro minerals. Okay. So, macro and micro. So, how we are classifying this? This classification we are doing on the basis what is called as the daily consumption. If we are consuming these minerals, or if the daily requirement is more than 100 milligram per deciliter, then they are called as the micro minerals, and if their daily requirement is less than 100 milligram per deciliter, then they are called as the micro minerals. ठीक है, अगर उनकी रिक्वायरमेंट 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, देन दे आर कॉल्ड एज माइक्रो, और अगर कम है देन दे आर कॉल्ड एज MICRO माइक्रो. ज़्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, यू कैन सी देर आर 7 ओके, देर आर टोटल 7 मिनरल्स विच कम्स इन द फर्स्ट कैटेगरी इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. सो दिस आर द व्हाट इज कॉल्ड एज द कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड सल्फर. ओके. So, ये 7 जो है इनकी रिक्वायरमेंट इट इज मोर देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एंड दे आर कॉल्ड एज माइक्रो. Micro, that is the MICRO micro, it can be further divided into 3 different categories, that is the essential trace elements, possibly essential trace elements and non-essential trace elements. Again we are further classifying this if the requirement is less than 100 milligram per deciliter. So, micro essential trace elements is iron, copper, iodine, manganese, zinc, molybdenum, cobalt, fluorine, selenium and chromium. So, these are the micro
minerals which are essential. Then possibly essential trace elements are there, nickel, vanadium, cadmium and barium. So, ये possibly जो है that are the essential trace, and non essential is like aluminium, then lead, mercury, boron, silver and bismuth. So, इस तरह से इसको क्लासीफाई किया जाता है into two different categories depending upon the daily requirement, that is the 100 मिलीग्राम पर लीटर ज़्यादा है that is called the micro, अगर कम है तो MSRO. तो आज अपन देखेंगे the very first that is the calcium. Actually, different books have given this different classification of this micro minerals. So, this is the standardized that I have taken. थोड़ा इधर उधर किसी बुक्स में हो जाता है. Okay. So, today we are saying regarding the calcium metabolism. So, this is the what is called the bulk measure of the mineral present in our body is the calcium. It is the calcium. Okay. So, calcium is the most abundant among the minerals in the body. Total content is 1 to 1.5 किलोग्राम. टोटल इसका जो कंटेंट रहता है अपने बॉडी में वो रहता है 1 to 1.5 किलोग्राम. ठीक है. एंड मैक्सिमम ऑफ इट इज प्रेजेंट इन बोन्स. So, 99% of it is present in the bones. Although 1% is found outside the skeleton tissue and performs a wide variety of functions. ठीक है. So, मैक्सिमम ये रहेगा तुम्हारे बोन के अंदर में, बट 1% इज फाउंड आउटसाइड द स्केलेटल मसल टिश्यू एंड परफॉर्म द variety of the functions. So, functions is very much important. So, first we have to see the functions in detail. Okay. So, 3 to 4 slides we will dedicate to know the functions of the calcium. बहुत सारे functions है इसके, और सबसे पहले है that development of bones and teeth. This is very much important. Okay. So, development of the bone and teeth. So, calcium along with the phosphate is required for the formation of bone, that is the hydroxyapatite crystals and physical strength of the skeleton tissue. Calcium it combines with phosphate to form the hydroxyapatite crystals that you have seen in the histology अगर आप ये करते हो तो. So, bone is regarded as a mineralized connective tissue. Why it is called as bone is regarded as mineralized connective tissue? Because the calcium present in the bone, it is in dynamic state. It can goes down, it can goes up, or it can be in equilibrium. Okay. So, this is regarded as the mineralized connective tissue. So, bone which are in a dynamic state serves as a reservoir of the calcium. So, calcium actually is stored in the bones. So, when it is required in the serum, we can take that. When serum is having the excess of the calcium, it can be taken to the bone. So, vice versa, the role is there of the calcium, and hence this bone is regarded as the mineralized connective tissue. Now, there are two types of cells present, or three types of cells present in the bone. One is called as osteoblast, one is called as osteoclast, and third is called as osteocytes. So, osteoblast they are responsible for the bone formation, and osteoclast it is for the bone removal or the demineralization. And what is osteocytes? The mature osteoblast, when they get entrapped in the connective tissue, it is called as the osteoblast. Okay. So, osteoblast, osteoclast, and third is the osteocytes. So, that was the first function. Second is for the muscle contraction, very much important, bone formation and then muscle contraction. So, calcium interact with the troponin C to trigger the muscle contraction. Okay. So, it is having a role in the muscle contraction, and calcium has also activate the ATPase, increase the interaction between the actin and myosin. So, in this whole scenario, by these three functions, there is the muscle contraction. The next function is the blood coagulation. So, several reactions of the cascade of the blood clotting process are dependent on the calcium, that is the factor 4. So, bone formation, tooth formation, muscle contraction and the blood coagulation. Next comes the nerve transmission. So, calcium is necessary for the transmission of nerve impulse. Okay. So, calcium is necessary for the transmission of the nerve impulse, and it is also essential for the membrane integrity and permeability. So, calcium influences the membrane structure and transport of water and several ions across it. So, calcium influences the membrane structure and transport of
water several electrons across it. So, this is the next function. Then activation of enzymes. Activation, you know, some of the enzymes they require some activation factors, and some of the minerals they act as the activation factor. So, calcium is needed for the direct activation of enzyme such as lipase, that is the pancreatic lipase. You know, there are three types of lipases present in the body. Pancreatic, one is in the GI tract and one is outside the GI tract. So, in the GI tract is the lingual lipase, gastric lipase, pancreatic lipase. Apart from this, pancreatic lipase is important in the adult, and then comes what is called the hormone sensitive lipase and lipoprotein lipase. So, the activation of this enzyme is through the calcium, and also for the ATPase enzyme and succinate dehydrogenase. For this enzyme we require calcium for its activation. Okay. Now, calmodulin mediate action of the calcium. So, calcium binding regulatory protein is there. Calmodulin, it is a calcium binding regulatory protein. Now, this calcium calmodulin complex activates the certain enzymes like adenylate cyclase, calcium dependent protein kinases. Okay. So, this is the interaction, that is the calcium and calmodulin complex is activates certain enzymes like adenyl cyclase, calcium dependent protein kinases. Then release of the hormones, certain hormones they are released with the help of what is called as the calcium. So, release of certain hormones like insulin, parathyroid hormone and calcitonin from the endocrine glands is facilitated by the calcium. So, these are the important functions. There are several other functions that we have to see, that calcium acts as intracellular messenger. This calcium acts as an intracellular messenger. So, certain hormones exert their action through the mediation of the calcium instead of cyclic AMP. So, which are these? So, calcium is regarded as the second messenger for such hormonal action, example epinephrine in the liver glycogenolysis. So, here this calcium acts as the intracellular messenger and the second messenger. This is also a role of the calcium as a third messenger for some hormones. So, this is the we called as second messenger and this is the third messenger. So, calcium serves as a third messenger for some hormones like the ADH, that is the antidiuretic hormones which act through cyclic AMP first and then through the calcium AMP. So, you can see here two different things, enzyme directly act हो रहा है और एंजाइम कैल्शियम जो है डायरेक्टली एक्ट हो रहा है और बाद में फिर सेकंड लेवल पे एक्ट हो रहा है. तो इसके लिए फॉर द ADH this hormone what comes into action first is the cyclic AMP and that is then followed by the calcium. Then secretory processes, calcium regulates microfilament mediated processes such as the endocytosis, exocytosis and the cell motility. Okay. This is the secretory process. And contact inhibition, cell to cell contact adhesion cells, it is also mediated by the calcium and action on heart. Calcium level ज़्यादा होता है तो it can cause the prolonged systole, it can cause the prolonged systole. Okay. That is the action on the heart. So, these are the various functions of calcium. Now, comes what is called as the daily requirement, how much it is required daily. So, adult men and women 800 milligram per day, women during pregnancy, lactation, postmenopausal 1.5 gram per day, children 1 to 18 years 0.8 to 1.2 gram per day and infants below 1 year is 300 to 500 milligram per day. Why there is difference between this 800 in the adult and children 1 to 18 years 1.2? Bones are forming. Bone formation, for the bone formation we require this. So, which is the enzyme that will be additionally required for bone formation? Any hormone that is secreted by the osteoblast, because osteoblast is responsible for the bone formation. That is the ALP, alkaline phosphate is required. You can see the normal range of ALP for adult and for children is different. Normal range is for adult is less and for children it is more, because there is more activity of alkaline phosphatase, and from where this alkaline phosphate activity is coming, it is from the osteoblast. Okay.
Now, the sources of the calcium, सबसे ज़्यादा calcium present रहता है in the milk and the milk product. Okay. And there are some also good sources like beans, leafy vegetables, fish, cabbage and egg yolk. But maximum what we get is through the milk and the milk product. So, these are the dairy sources of the calcium and non-dairy food sources of the calcium, nothing in this much net. Absorption, now very much important that where we take the calcium through milk or dairy product or through the tablets, we can say that what happens to this calcium. Is taking the calcium only is required or something additional is required. What is additional required beside vitamin D is required apart from calcium. If some person is suffering from vitamin D deficiency and although he is taking the calcium, it will not get absorbed properly. Okay. So, absorption occurs where it occurs in the duodenum through the energy dependent active process. Okay. So, this absorption occurs in the duodenum through the energy dependent active process. So, which are the factors that promote the calcium absorption and which are the factors that will inhibit the calcium absorption. So, what are these things that will favor and inhibit? So, favor is through the vitamin D, very much important. So, what we require for calcium absorption is the vitamin D and it is through its active form of the vitamin D called as calcitriol. Now, what actually this vitamin D or the calcitriol does? So, it induces the synthesis of calcium binding protein in the intestinal epithelial cells and promotes the calcium absorption. So, what is the exact role of this vitamin D? It induces the synthesis of calcium binding protein in the intestinal epithelial cells. So, when we are taking the calcium through the diet, when it is going to the duodenum, in the duodenum what we require for calcium absorption is the calcium binding protein and this calcium binding protein is produced by vitamin D. Now, there is one more requirement is there, but that is not direct, we can say that it is an indirect. So, parathyroid hormone is required, is also enhances the calcium absorption through the increased synthesis of calcitriol, you can see here. So, this is the role which is what we can say that after or before the vitamin D. So, vitamin D is there, it is producing the calcium binding protein, but for the synthesis of or for the vitamin D, what we called as the increased synthesis of vitamin D we require is the parathyroid hormone. Okay. Now, the acidity, that is the low pH in the intestine, lactose present in the diet and amino acids like lysine and arginine, if they are present in the diet, they facilitates calcium absorption. So, all these factors they will actually cause the calcium absorption. Okay. Now, the factors that will inhibit the calcium absorption, which are these factors that will inhibit the calcium absorption? So, phytates and oxalates, when they are present in the diet, when we consume through the vegetables, all these things, they forms an insoluble salts and interfere with the calcium absorption. Okay. So, that is the phytates and oxalates, when they are present they form an insoluble salts and they are interfere with the calcium absorption. Now, comes very important second mineral, that is the phosphate. So, you should have the balanced level of the calcium and phosphate. If there is high content of dietary phosphate, that also result in the formation of insoluble calcium phosphate and that will prevent the calcium uptake. If you are having 1 molecule of calcium and are having 10 molecules of phosphate, that is not an ideal. So, the ideal is the dietary ratio of calcium phosphate should be between 1:2 and 2:1. And this is ideal for the optimum calcium absorption by the intestinal cells. So, that is also important, you should require the phosphate a proper ratio 1:2:2:1. अगर ज़्यादा हो गया तो that will interfere with the calcium absorption. Then the free fatty acids react with the calcium to form the insoluble calcium soaps. So, this is particularly observed when the fat absorption is impaired. Okay. So, if the free fatty acids they are present in the diet, they also react with the calcium to form the calcium soaps. And for the favorism we have seen the low pH, and for this inhibiting
we are seeing the high pH, that alkaline pH element is present in the intestine, and high dietary fibers interfere with the calcium absorption. High dietary fibers. Dietary fibers means they are the carbohydrate which are not absorbed, not digested. Okay. So, if they are present, then they also interfere with the calcium absorption. Now, plasma calcium, very important. When we take the blood, we measure the calcium, that calcium is called as total calcium. But what is now seen by the clinician is that in spite of taking the total calcium, if you have the ionized calcium, that will be more effective, or that will give a true picture of the calcium levels. So, normal serum or plasma calcium level is 9 to 11 milligram per deciliter. Normal is 9 to 11 milligram per deciliter. Now, you can see here it is a very narrow window where you have to maintain the serum or plasma calcium level, only 9 to 11. Blood glucose level, what is the normal range for fasting? 70 to 110, the broad one, 70 to 110. But for calcium it is only 9 to 11. And if some person is having or some children is having level below 7 milligram per deciliter, then it causes tetany, and tetany is a life threatening condition. So, we have to maintain this level in between 9 to 11 milligram per deciliter. So, there is a difference between tetany and tetanus. Tetanus is a bacterial infection that we will see in the second year. So, tetany 7 से कम नहीं होना चाहिए, और हो गया तो tetany हो जाएगा. What is tetany? Of the muscles. Okay. Now, out of this 9 to 11, what we can say that 11 we take the standard, 5 milligram is ionized, it is the biologically active form. 1 milligram per deciliter is associated with the citrate and phosphate, calcium citrate and calcium phosphate, and 5 milligram is bound to the protein. It is bound more to the albumin and less to the globulin. So, these three forms are there of the calcium, out of which only ionized calcium is biologically active, and they can take part in various reaction and their function. एक तो citrate और phosphate के साथ में combine हो रहा है, और एक तो तुम्हारे protein साइड बॉन्ड कर रहा है. So, ionized form is diffusible and non-ionized form is not diffusible from the blood to the tissue. So, that is the important. So, ionized form कितना है ये देखना बहुत ज़रूरी है. So, these are the three forms of the calcium. Now, this is a very commonly asked question, factors regulating serum calcium level. Three factors are there: vitamin D, parathyroid, calcitonin. Three are there. They are maintaining the serum calcium level. We have to maintain between 9 to 11 milligram per deciliter only. कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं. तो सबसे पहले रोल आता है तुम्हारे विटामिन डी का, दैट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन बी इज कैल्सिट्रियोल, दैट इज द 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल. क्या रोल इसका, अपन ने अभी बात की थे. इट इंड्यूसेस द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इन इंटेस्टिनल सेल्स, and this protein increases the intestinal absorption of calcium as well as the phosphate. Thus, serum calcium level is increased by the calcitriol. Okay. Now, see here the dynamic action. What is happening here? That when you go to any clinician, it does not prescribe you only calcium, vitamin D is added. Okay. So, vitamin D, when it is added, what is happening? Calcium is absorbed from the intestine and it is going to the blood. Now, in the blood you have to maintain between 9 to 11. What happens if the level goes to 12, 13? After absorption. So, we have to decrease that level also. So, that calcium will be taken to the bone for the deposition. Okay. So, bone is a reservoir of the calcium. You are having the intestinal absorption of the calcium and you are having the blood level. Imagine these three parts. So, here it is bone, here it is your blood or the serum, and here is the intestine. So, calcium absorb हो गया, कहाँ गया, सीरम में. सीरम में लेवल इंक्रीज कर रहा है, वो नहीं चाहिए अपने को.
अगर इंक्रीज करा तो फिर यहाँ से अपन कैल्शियम ले लेंगे और बोन में क्या करेंगे, डिपोजिशन करेंगे। यहाँ पे एक मेंटेनेंस हो गया। सीरम कैल्शियम लेवल 9 to 11 मिलीग्राम। अब इसका अपोजिट थिंक करो, इसको छोड़ दे स्लाइड को। अगर सीरम कैल्शियम लेवल कम हो रहा है तो कहाँ से जाएगा कैल्शियम, बोन से जाएगा, टूथ से जाएगा, because once this teeth or your one tooth is formed, it is formed. This teeth is not under your maintenance of the serum calcium level, they are only the bones. Okay. So, this is the dynamic action for the vitamin D. विटामिन डी पहले सीरम कैल्शियम लेवल करेगा और ज़्यादा हो गया तो फिर वो बोन के अंदर में जाके तुम्हारा वहाँ पे डिपोजिशन भी करेगा। सो इट ऑल्सो स्टिमुलेट द कैल्शियम अपटेक बाय द ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ द बोन एंड प्रमोट द कैल्सिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। कौन कर रहा है, विटामिन डी कर रहा है। ये दोनों भी रोल कर रहा है, सीरम लेवल भी बढ़ा रहा है, सीरम लेवल में ज़्यादा बढ़ गया तो वो फिर क्या करेगा, कैल्शियम अपटेक ऑस्टियोब्लास्ट से वो भी करेगा एंड प्रमोट द कैल्सिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। सो दिस इज द डायनेमिक एक्शन हियर ओनली ऑल्सो। नाउ द so overall what is happening in this case, serum calcium level is increased, कम है तो बढ़ गया है, ठीक है। पैराथायराइड भी वही करेगा। दिस introduction of this PTH hormone, it is secreted by the two pairs of parathyroid glands that are closely associated with the thyroid glands. थायराइड के साथ में पैराथायराइड रहता है। जब सर्जरी करते तो आपको पैराथायराइड ग्लैंड जो रहता है उसको प्रिजर्व करना पड़ता है, ओनली थायराइड निकालना पड़ता है। So that is a complicated operation, somewhat complicated. We have to see that this should not be loses during the thyroid operation. Now the secretion of the PTH is prompted by the low calcium level. ये जरूरी है। क्या हो गया यहाँ पे, PTH कब आएगा रोल में, जब लो कैल्शियम लेवल है। विटामिन डी का प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, जब लो कैल्शियम लेवल है। कहाँ पे लो कैल्शियम लेवल है, ब्लड के अंदर में या फिर सीरम के अंदर में। कितना नैरो रेंज है, 9 to 11। जब लो हो जाएगा तुम्हारा कैल्शियम लेवल तो there will be release of the PTH from the parathyroid gland and it is under the negative feedback regulation of the serum calcium। ये बहुत ज़रूरी लाइन है, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। बोल तो PTH जो रहेगा हर कभी सीक्रेट नहीं होगा। जब ब्लड शुगर लेवल ब्लड कैल्शियम लेवल आपका कम हो जाएगा तभी इसका पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होगा वहाँ पे, ठीक है। समझ रहा है आप दोनों को, गेटिंग द पॉइंट। PTH के बारे में क्या बोला मैंने अभी कि अगर लो सीरम कैल्शियम लेवल रहेगा तो ही PTH का सिक्रेशन होगा टू इंक्रीज द कैल्शियम लेवल। ओके, नाउ दिस PTH इज हैविंग एक्शन ऑन 3 different टारगेट ऑर्गन्स। इट इज हैविंग एक्शन ऑन द बोन, it is having action on the kidney and it is having the action on the intestine। तीनों के ऊपर में एक्ट करके क्या करेगा, ये तुम्हारा सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। सो इसके बोन के ऊपर में एक्शन क्या है, सो इट इज वेरी इजी। PTH कॉज द डीकैल्सिफिकेशन और डिमिनेशन ऑफ द बोन, अ प्रोसेस कैरिड आउट बाय द ऑस्टियोक्लास्ट। बोन बनाना है तो ऑस्टियोब्लास्ट, वहाँ से कैल्शियम निकालना है तो ऑस्टियोक्लास्ट। सो PTH का एक्ट कर रहा है बोन के ऊपर में। It causes the decalcification or demyelination of the bone, a process carried out osteoblast. This is brought out by the PTH stimulated increasing activity of the enzyme pyrophosphatase and collagenase। इसके हिसाब से ये एक्टिविटी होती है and hence the demyelination ultimately leads to an increase in the blood calcium level। तो ये होगा तुम्हारा ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाने के लिए एक्शन ऑन द बोन। सिंपल सा वहाँ से क्या कर रहा है, वो कैल्शियम को निकाल रहा है। अब आते हैं अपन किडनी। किडनी के ऊपर क्या करेंगे, वो कैल्शियम को जाने नहीं देगा इन सिंपल फॉर्म। सो PTH इंक्रीज द कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन बाय द किडनी ट्यूबुल्स। दिस इज द मोस्ट रैपिड एक्शन ऑफ PTH टू रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। सो PTH प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ कैल्सिट्रॉल इन द किडनी बाय स्टिमुलेटिंग द 1-हाइड्रोक्सी। ये दो उसका एक्शन है, ये तो उसको जाने नहीं देगा और साथ में विटामिन डी भी प्रोड्यूस करेगा। अपन जो देखे थे ना फर्स्ट स्लाइड में, वो यहाँ पे भी है। Okay, so these are the 2 different action on the kidney. And what is the action on the intestine? The action of PTH on the intestine is indirect. It increases the intestinal absorption of calcium through the promoting of the synthesis of vitamin D. Okay,
तो ये इसके 3 एक्शन है, एक बोन के ऊपर में है, एक है तुम्हारे किडनी के ऊपर में, और एक है तुम्हारे इंटेस्टाइन के ऊपर में। बोन के ऊपर में क्या कर रहा है, डीमिनरलाइजेशन, किडनी के ऊपर क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन, एंड देन प्रोडक्शन ऑफ द कैल्सिटोल बाय द किडनी बाय स्टिमुलेटिंग द 1 हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ये, और इंटेस्टाइन के ऊपर में डायरेक्टली प्रोमोट द सिंथेसिस ऑफ द कैल्शियम, दैट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी. So this you can see, this slide shows PTH. Okay. So the role starts with parathyroid gland sensing low serum calcium level. It sends the low calcium level, and when it sends the low calcium level, it secretes the PTH, having action on the bone, release the calcium and increase the serum calcium level. Having the action on the kidney, increase the calcium formation and decrease excretion of the calcium. And this is having, and 1 hydroxylation, this is having the action, vitamin D is having the action on the small intestine, increase absorption of the dietary calcium. In this way, there is an increase in the serum calcium level. Okay. The same thing it is described over here. Now third is calcitonin. अब ये इसका एक्शन है एग्जैक्टली अपोजिट है तुम्हारे पीटीएच और विटामिन डी से, दोनों क्या कर रहे हैं, सीरम को बढ़ा रहे हैं, ये क्या करेंगे, इसको कम करेंगे. अगर सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ गया 11 से 12-13 हो गया तो ये उसको वहाँ से ले जाएगा. सो brief introduction, calcitonin is a peptide containing 32 amino acids. It is secreted by the parafollicular cells of the thyroid gland. Now the action of the calcitonin on the calcium metabolism is antagonist to that of the PTH. Thus calcitonin promotes the calcification by increasing the activity of the osteoblasts, and further the calcium decreases the bone reabsorption and increases the excretion of calcium in the urine. So अपन जो देखे थे सब उसका उल्टा है, यहाँ पे कैल्सिफिकेशन प्रमोट कर रहा है ऑस्टियोब्लास्ट से, फिर बोन को रीअब्जॉर्ब करना है जो किडनी से वो कम कर रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है कैल्शियम को किडनी में से, तुम्हारे यूरिन में से. सो दस कैल्सिटोनिन इज हैविंग अ डिक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑन द ब्लड कैल्शियम लेवल. सो दिस इज वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, हाउ you are maintaining the serum calcium level in the narrow range of 9 to 11 milligram per deciliter. This is the same thing. So, in this way that this homeostasis is achieved 10 or 11, we can say that calcitonin is there. Okay. So, there are two different things, if the level is rising and if the level is falling. If the level is falling, then there is what we can say that from the bone we are taking this calcium. PTH is having the action on the kidney for formation of the what is called as active form of vitamin D acid triol, and it increases the level. Sir, thyrocalcitonin acts on intestine. Which one? Does thyrocalcitonin act on intestine? Thyrocalcitonin. Thyrocalcitonin, what is thyroid? It is the calcitonin, no? Yes. It is the calcitonin, not thyrocalcitonin. Calcitonin, what is the effect? It is increasing the serum calcium level. When it senses that there is, it is having the opposite effect. It senses that there is increase in the serum calcium level, then it causes the deposition of calcium in the bone. In the kidney, it causes the losing of calcium through the urine, and thus there is decrease in the calcium level. इसके अपोजिट ये होता है कि अगर ये लेवल कम हो रहा है, इफ देर इज फॉलिंग ऑफ द सीरम कैल्शियम लेवल, तो इस तरह से ये चलता है. थायराइड ग्लैंड पीटीएच क्या करेगा, ये दोनों के ऊपर एक्शन करेगा, बोन के ऊपर में और किडनी के ऊपर में. बोन के ऊपर में करेगा, यहाँ से कैल्शियम निकलेंगे, इधर जाएगा और यहाँ पे बताएगा ये कि आपको विटामिन डी का सिंथेसिस करना है. सो इन दिस वे दिस सीरम कैल्शियम लेवल इट इज मेंटेन 9 to 11 mg/%. नाउ एक्सक्रीशन ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम को अपन कैसे किस तरह से एक्सक्रीट कर सकते हैं. सो इट इज एक्सक्रीटेड पार्टली थ्रू द किडनी एंड मोस्टली थ्रू द इंटेस्टाइन. ओके, जब अपने को ये रहता है कि अपन कैल्शियम को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अगर अपने को कैल्शियम का रिक्वायरमेंट नहीं है तो अपन
क्यों करेंगे अपन, उसको एब्जॉर्ब क्यों करेंगे, तो उसको एब्जॉर्ब नहीं करना है, तो वहाँ से निकल जाएगा इंटेस्टाइन के थ्रू से वो, ठीक है, एंड मोस्टली थ्रू द एंड कुछ पार्टली थ्रू द किडनी बट मोस्टली थ्रू द इंटेस्टाइन. सो renal threshold for serum calcium level is 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. ये ब्लड ग्लूकोज के लिए कितना है रीनल थ्रेशोल्ड 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. एंड ऑल्सो एक्सक्रीशन थ्रू द फीसेस इज कंटिन्यूस प्रोसेस एंड दिस इज इंक्रीज इन विटामिन डी डिफिशियंसी. विटामिन डी नहीं रहेगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, और कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होता वो फीसेस के थ्रू चला जाएगा. ओके, नाउ कैल्शियम इन द टीथ अपन जो बात किए थे अपन ने वही है दैट द टीथ calcium is not subjected to the regulation as observed for the bone calcium. Thus, the adult teeth once forms does not undergo decalcification to meet the body needs of the calcium. Okay. Now, अब ये हो जाएगा इसका इंटरप्रिटेशन. एक तो कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है. कम का तो अपन एक देख लेते हैं टिटानी का, बढ़ रहा है. अगर बढ़ जाता है सीरम कैल्शियम लेवल बिलो और अबव 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो क्या सिम्टम्स क्या आएंगे उसके अंदर में. There will be lethargy, muscle weakness, loss of appetite, constipation, nausea, increased myocardial contractivity and susceptible to the fractures. अगर हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है तो कॉजेज हाइपरपैराथायरॉयडिज्म. अगर पैराथायरॉयड की ज़्यादा एक्टिविटी होगी तो फिर ये क्या करेगा हाइपरकैल्सीमिया करेगा. ओके, एंड देयर विल बी डिक्रीज इन द सीरम फॉस्फेट एंड इंक्रीज इन द अल्कलाइन फॉस्फेट एक्टिविटी सीन. यहाँ पे क्या हो रहा है अल्कलाइन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी बढ़ गई. क्यों बढ़ गई यहाँ पे एक्टिविटीज अल्कलाइन फॉस्फेटेज की ज़्यादा हो रहा है ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी. तो बॉडी सेंस कर रहा है कि मेरे पास में कैल्शियम ज़्यादा है, तो उसको पता नहीं कि इसका रेगुलेशन ब्रेक हो गया है, तो उसको लग रहा है कैल्शियम है, तो कैल्शियम है तो फिर मुझे बोन फॉर्म करना है, बोन फॉर्म करना है तो फिर वहाँ पे ये तुम्हारा इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी. ओके, सो देयर इज इंक्रीज इन द अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी. There will be elevation in the urinary excretion of calcium phosphorus resulting in formation of the urinary calculi. जो किडनी स्टोन फॉर्म्स होते हैं अलग अलग तरह के रहते हैं, उसमें से जो है ये कैल्शियम फॉस्फेट के होगी तो वहाँ पे इस कंडीशन के अंदर में हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में यहाँ पे पूरा है. ओके, एंड इन दिस कंडीशन देयर इज डिटरमिनेशन ऑफ एनोस कैल्शियम इज डन. ये प्रॉपर बताएगा कि ये हाइपर कैल्शियमिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है. बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म अपने को देखना है. हाइपोकैल्शियमिया कम होना कैल्शियम. So, most serious and life-threatening condition, it is characterized by the fall in serum calcium 7 milligram per day causing tetany. अपन जो देखते हैं symptoms are neuromuscular irritability and convulsions. Cause उसके opposite है ये hypoparathyroidism, and this may happen after an accidental surgical removal of the parathyroid gland. कब हो सकता है accidental removal? जब अपन थायराइड निकाल रहे हैं, थायराइड के साथ में अगर पैराथायराइड आपने प्रिजर्व नहीं किया तो ये चीज़ हो सकती है, या फिर ऑटोइम्यून डिजीज हो सकता है. इसके लिए ट्रीटमेंट क्या रहेगा हाइपोकैल्शियम के कैल्शियम भी देंगे और साथ में क्या देंगे विटामिन डी भी देंगे. और फिर बहुत ही कम हो गया मान लो तो कैल्शियम ग्लूकोनेट अपने को देना पड़ेगा इंट्रावेनसली. अगर कोई टिटानी में आता है इमरजेंसी में आपके पास में पेशेंट तो यू कैन गिव दिस इंट्रावेनसली कैल्शियम ग्लूकोनेट टू इंक्रीज द कैल्शियम लेवल. नाउ हाइपो लेवल है तो यू कैन सी डिफरेंट थिंग्स इन अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन. सो इन द अडल्ट्स rickets, in the children will be rickets, defective calcification of the bones, there will be low level of vitamin D, dietary insufficiency of calcium phosphorus. इस वजह से हो सकता है and increased LP activity is seen. So, this is the rickets. So, rickets in the children and osteomalacia in the adults. Okay. Now, what is renal rickets? So, renal rickets is damage to the renal tissue causing impairment in the synthesis of calcitriol, and it does not respond to the vitamin D in ordinary doses, hence also called as vitamin D resistance rickets. और तो किडनी की जो एबिलिटी है, किसकी एबिलिटी किडनी की क्या करेगा विटामिन डी फॉर्म करेगा. अगर विटामिन डी फॉर्म नहीं हो रहा है तो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन ही फॉर्म नहीं होगा, इसलिए फिर कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, और कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं होगा तो फिर कैल्शियम लेवल कम हो रहा है. कैल्शियम लेवल कम हो रहा है तो इट इज द डिफेक्टिव कैल्शियम इन द बोन्स एंड इट इज ड्यू टू दिस renal rickets due to kidney causes, and it can be treated by administration of the calcitriol. Osteoporosis very common, it is seen in adults. ठीक है, adults में इसको देखा जाता है osteoporosis को, especially after old ages. Okay. So, demineralization of the bone resulting in the progressive loss of the bone mass. So, it is you can see elderly people over 60 years of age, very common है. बाथरूम में गए वहाँ पे गिर गया फ्रैक्चर हो गया, बहुत कॉमन है क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया उनका डिमिनरेशन हो गया बोन का. सो मोर प्रोमिनेंट इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स फ्रीक्वेंट बोन फ्रैक्चर्स आर देयर. एंड व्हाट इज द कॉज? कॉज इज
ability to produce the calcitriol from the vitamin D increases the which particularly post मेटाबॉलिक। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है जो रहता है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। ऑल्सो व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस? इमोबलाइज और सेडेंटरी इंडिविजुअल्स। अगर सेडेंटरी इमोबलाइज है तो देयर विल बी डिक्रीज बोन मास एंड देयर विल बी डिफिशिएंसी इन द सेक्स हार्मोन अगर होता है तो वो भी रहता है इसके अंदर में। ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा इसके अंदर में? पोस्ट मेनोपॉज था एस्ट्रोजन प्लस कैल्शियम सप्लीमेंटेशन इट इज गिवन एंड डाइट अपन एडवाइस करते हैं जिसमें हायर कैल्शियम लेवल है 1.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आपको ये आपको डाइट में लेना पड़ेगा। सो दिस इज द ऑस्टियोपोरोसिस। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड व्हाट इज कॉल्ड एज कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। क्या रहता है इसके लिए मेंटेनेंस के लिए? तीन चीज़ें क्या रहती है? विटामिन डी, पीटीएच एंड कैल्सिट्रियोल। विटामिन डी क्या करेगा? कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन फाइंड करेगा इंटेस्टाइन के अंदर में। ओके और सेकंड रहेगा तुम्हारा पीटीएच। पीटीएच क्या करेगा? बोन, किडनी एंड इंटेस्टाइन। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन थ्रू इंटेस्टाइन एंड किडनी, ठीक है, और डिमिनरेशन ऑफ द बोन, ठीक है। और कैल्सिट्रियोल क्या करेगा अपने? ये क्या करेगा? कैल्सिटोन क्या करेगा? ऑपोजिट एक्शन ऑफ दिस टू इट विल कॉज मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन करेगा ये, ठीक है। ओके एंड विच इज द डाइट रिच इन कैल्शियम? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस? सबसे पहले इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? बोन फॉर्मेशन। वेयर इट इज? ऑस्टियोब्लास्ट की बात करते हैं अपन। ऑस्टियोब्लास्ट क्या सीक्रेट करता है? कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है? अल्कलाइन फॉस्फेट। अल्कलाइन फॉस्फेट और कहाँ सीक्रेट होता है? एक जगह और, कहाँ पे? cells lining the biliary canaliculi. Hence, ALP activities increase, or we can say the high level of alkaline phosphate is in two diseases, bone diseases and second is obstructive jaundice. Okay. So, in these two conditions there will be this thing. So, फॉस्फोरस के बारे में थोड़ा सा एक स्लाइड देख लेते हैं, एक और दो स्लाइड, देन वी विल स्टॉप। सो फॉस्फोरस कितना रहता है? वो कितना था? कैल्शियम कितना था टोटल? 1.5। उतना फॉस्फेट कितना है? 1 kg, ठीक है। ऑल्सो दिस ऑकर्स 80% इन कॉम्बिनेशन विथ कैल्शियम इन बोन्स एंड टीथ एंड 10% इज फाउंड इन मसल एंड ब्लड इन एसोसिएशन विथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स एंड 10% इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस केमिकल कंपाउंड्स। फिर से वही आ जाता है इसका बायोकेमिकल फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन क्या है? एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉस्फेट इट इज यूटिलाइज फॉर द फॉर्मेशन यूटिलाइजेशन ऑफ द हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड लाइक ATP, GTP एंड क्रिएटिन फॉस्फेट। तो ये इसका फॉस्फोरस का रोल है ATP फॉर्मेशन के लिए। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? So, first you are having the base is attached to sugar and sugar is attached to the phosphate. These three they are called as nucleotide and nucleoside is only base plus. Okay. So, formation utilization of high energy phosphate compound ATP, CTP and this is required for the formation of phospholipids, phosphoproteins and nucleic acid or DNA and RNA and is also essential components of several nucleotides coenzyme like NAD, NADH, paradoxal phosphate, ADP and ADP. And several proteins and enzymes are activated by phosphorylation and phosphate buffer maintain the pH of the blood. Okay. So, we will stop here today and in next class we will see regarding the phosphate.